Thank you, Dr. Halima Sadia, for the very warm welcome uh, and the great introduction. This is going to be a very short session, right? So I will take 10 minutes to talk about the education sphere and business in the education sphere and share some ideas with all of you. Yes, Miss Asma, the pattern is that first you will be getting the chance to speak about your initiative. And then afterwards, we will have some rubaru questions, like face-to-face questions. And Sure. that will be by the host. And then after that, we will open the house. If they have any questions, they can ask it. So this is Sure. the pattern that we are going to follow today. So thank you very Thank much, Miss Asma. We are very eager to know about you and about your initiative. Please go ahead. Sure. So my name is Asma Zaidi, and I have very recently started my company, a startup called Let's Read. Actually, the initiative became a company recently, but I've been working on it for almost 10 years now. 10 साल से मैं अपनी कंपनी का काम कर रही हूँ, मगर उसे कंपनी की शक्ल और बिजनेस का एस्पेक्ट, इट्स अ फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसका जीएसटी अकाउंट और वो सब हमने अभी रिसेंटली किया है उसको एस्टैब्लिश। मगर काम हम ये जो हमारा काम है रीडिंग का और टीचर ट्रेनिंग का और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का स्कूल्स को, ये हम 10-12 साल से कर रहे हैं इंडिया में। एंड वी हैव बीन डूइंग इट अराउंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, लद्दाख, लेह से लेके नीचे तमिलनाडु, चेन्नई, and now recently we have expanded to Africa, and we are trying to expand in the Middle East. तो हम अपनी कंपनी को धीरे धीरे एक्सपैंड करें। तो आज the topic that we are doing today is थोड़ी सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और एजुकेशनल स्फीयर में बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए और उसके कैसे थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, उनको कैसे ओवरकम करते हैं, और जो भी थोड़ी सी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हमें आती हैं जो हम वो इंशाल्लाह I'm going to use with you today. So Let's Read company is all about providing solutions to schools and to educators and to parents, all stakeholders. और हम लोगों की कोशिश ये है कि रीडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं या जो स्कूल जाते हैं वो भी सही से रीड नहीं करते, एंड हेंस उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी किसी ना किसी पॉइंट पे स्टक होता है, बिकॉज अ ह्यूज चंक, अ बिगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग, टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड, दे डोंट नो हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो हमने अपनी कंपनी के लिए जो थोड़े से आइडियाज और ट्रिक्स यूज करे थे वो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे। अगर हम बात करेंगे कि बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज, एक्सक्यूज मी, अगर हम बात करेंगे कि बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज, तो एक चीज जो हम देखते हैं जनरली वी सी देयर इज समथिंग कॉल्ड विच इज 0 to 1 टाइप ऑफ प्रॉब्लम. So 0 to 1 type of problem means that you have to see the market and you really have to understand your user thoroughly. कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी बिजनेस को कौन इस्तेमाल करेगा, who is your user, and you have to really do a huge survey through experience and know what the people want. अक्सर ये होता है कि लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो मार्केट का सर्वे नहीं करते, वो देखते नहीं कि कौन सी चीज की जरूरत है, कहाँ जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सोल्यूशंस हैं, दूसरे लोग क्या सोल्यूशंस दे रहे हैं. सो 0 to 1 टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इज providing new ideas for a specific problem. So for example, एक जैसे चैट जीपीटी है आजकल बहुत वो है, very famous. Chat GPT is very famous, and Chat GPT use the 0 to 1 strategy for solving their problem. उससे क्या होता है, 0 to 1 का मतलब क्या होता है कि मतलब मार्केट में किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है और आप कोई नया सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ये 0 to 1 काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल गूगल था पहले. गूगल, जब आप कोई भी चीज गूगल में टाइप करते थे तो गूगल गेव यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स एंड लिंक्स.
तो अब प्रॉब्लम ये था कि गूगल हमें आंसर्स तो दे रहा है, बट हमको ये नहीं मालूम कि उसमें उसमें टाइम लगता था बहुत सर्च करने के लिए कि कौन सा सही आंसर है, चीजों को हम देखें, सर्च करें. सो इवन दो वी गॉट आंसर्स, दे वर नॉट स्पेसिफिक टू आवर नीड and specific to what you want. So chat GPT solved this problem by giving you exactly what you want and without wasting any time. It gave you solutions. If I want to write a letter, I don't have to write my own letter. I can say, I can ask chat GPT to write that letter for me. So chat GPT is going to do the homework and chat GPT is going to solve that problem. How relevant and what are the pros and cons of such a thing is not part of the topic right now, but the idea is that 0 to 1 type of problem chat gpt ने सॉल्व किया. प्रॉब्लम मार्केट में ये था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है एंड इट इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड चैट जीपीटी सॉल्व दैट प्रॉब्लम. Another example is the company is of the company class plus. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो भी बिजनेस यूजर मॉडल्स या एप्स होते हैं वो कंपनी के नाम से होते हैं. तो क्लास प्लस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी बाय सेइंग के हम जो ऐप प्रोवाइड करेंगे उसमें हमारा नाम नहीं होगा, आपका नाम. तो ऐप हमारा होगा, नाम आपका होगा. सो ये अलग बात है कि उसके बाद बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, बट दिस वाज अ प्रॉब्लम एंड क्लास प्लस सॉल्व्ड इट. सो दिस इज कॉल्ड 0 to 1 type of problem solving. There is another problem solving method which is 1 to n type of problem solving. इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है. इसका मतलब होता है कि सोल्यूशन मार्केट में ऑलरेडी है, आप उस सोल्यूशन को बेटर बना रहे हैं या आपने उस सोल्यूशन को बेहतर या नया रूप दिया, which is what DMart did, which is what Geo New Technology did, right? DMart ने क्या किया? DMart ने मार्केट में सस्ती चीजें बहुत होती हैं. जैसे हम लोग आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो अगर हमको सस्ती चीजें चाहिए तो हम ओल्ड सिटी जाते हैं. ज्यादातर ओल्ड सिटी रिटेल शॉप्स में आपको देर आर स्पेसिफिक पॉकेट्स इन एवरी सिटी विच गिव यू cheap material that you want to use. So what did DMart do? DMart brought all that cheap material in one place. So if you want to buy cheap stuff and you want to buy things which you need but at a sasta dam, then you go to DMart, right? So इस वक्त एजुकेशनल स्फीयर में जो नीड है वो स्टेम की है, और ये जो विजुअल क्वालिटी वाले जो सॉल्यूशंस हैं right now they are very costly and they are not falling in the education business. So these are two areas that really need to be tapped uh, in the educational sphere, right? When we talk of market trends, so we have to really see कि हम अगर नया टाइप ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जहां डिमांड होता है वहां सप्लाई होता है. तो एक मार्केट ट्रेंड ये देखना होता है कि हम डिमांड क्रिएट कैसे कर सकते हैं, and how do you, and for that you have to create a need, right? So right now the biggest, one of the biggest gaps in education is with young adults. बहुत सारे graduates हैं, बहुत सारे students हैं जो colleges से निकल रहे हैं, but they are unemployable, right? So one of the solutions that Bajaj did is that it tied up with universities and came up with a program which is called BEST, Bajaj Employable Skills Technology Center. And here they started doing extra things and creating a value for the market and upskilling students so that they are able to find employment, right? तो इसी तरह से जब हम मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज की मार्केट में नीड है, डिमांड है, और अगर हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिमांड को क्रिएट करें, राइट? सो दिस वाज जस्ट वन ऑफ द क्विक एग्जांपल्स फॉर दिस. अगर हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमको कोई भी अपनी एजुकेशनल अपने बिजनेस में वी आर फेसिंग अ फ्यू चैलेंजेस. So there are 2 3 very nice techniques which you can follow. One of my favorite techniques is the 5 why technique, which helps you to find the root cause of a problem. For example, एक बहुत famous case study है ताजमहल की. The problem was कि ताजमहल is fading, right? ताजमहल का कलर खराब हो रहा है, ताजमहल is fading. So they use the 5 why technique
टू फाइंड अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। तो जब उन लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया कि व्हाई इज ताजमहल फेडिंग, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट केम अप वाज, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, गैस है, ये सब तो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, मगर व्हाट वाज अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट कुड इमीडिएटली बी सॉल्व। तो पता चला ताजमहल पे जो कीड़े हैं और जो बर्ड्स आती हैं, उनकी जो उनका जो वेस्ट होता है, जो बर्ड की पॉटी होती है, इट कम्स ऑल ओवर द बिल्डिंग and it is spoiling the beauty of the Taj Mahal. It is discoloring it. It is causing a fading of the materials because there are too many birds. So you start asking questions, why are the birds coming to Taj Mahal? So the birds were coming to Taj Mahal because of the light, and there were many insects. So again, you ask the question, why are there many insects in Taj Mahal? So बहुत सारे insects हैं क्योंकि वहां पर स्पाइडर वेब्स बहुत सारे हैं। स्पाइडर वेब्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, एंड लिजर्ड्स हैं। एंड सो द क्वेश्चन पूछते 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 they found out that because there are a lot of spiders and spider webs, there are a lot of insects, there are a lot of lizards. The birds come to eat those insects and lizards, and that is why there are many bird dropping, which is causing the huge problem of fading in Taj Mahal. So just by cleaning the spider web and using this technique, they were able to overcome their challenges. So this is one of the techniques that we use at Let's Read also. The other idea is thought spark. It is a technique that is used to solve existing problems. So इसका तरीका ये होता है कि आप हमेशा आइडिया जो सोल्यूशन देते हैं आप प्रॉब्लम का, उसमें आप दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एंड और यस। यू कैन नॉट वर्ड्स लाइक कुड, शुड, वुड, ये सब नहीं यूज कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने उसका लेट्स रीड का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉब्लम है, हाउ डू आई इंक्रीज टच पॉइंट विद पार्टनर स्कूल्स एंड ensure that teachers benefit from a program, then we all sit together and people start giving solutions. तो किसी ने कहा let's create a WhatsApp group, तो दूसरे ने कहा yes, and we can give options of monthly doubt solving sessions. तो तीसरे ने कहा and we can do something about onboarding school teachers and mid-year training. फिर चौथे ने कहा yes, and we can collect quarterly data of school. तो इस तरह जितने भी लोग टीम में हैं, सबके आइडियाज हम लिखते जाते हैं, और कितने भी absurd हों। तो इसका एक रूल होता है, और वो रूल ये है कि कोई भी आइडिया आप डिनाई नहीं कर सकते, और कोई भी कमेंट नहीं कर सकते बीच में टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द आइडियाज। यू जस्ट कीप शेयरिंग, चाहे कितने भी absurd आइडियाज हों, यू जस्ट कीप शेयरिंग। एंड जो इंसान लिखता रहता है आइडियाज, वो देखता रहता है कि कौन कौन से आइडियाज आर कमिंग इन, एंड वंस यू फिनिश द सेशन, देन यू गो ओवर द आइडियाज एंड सी विच वन इज पॉसिबल एंड विच वन इज नॉट। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी, आई डोंट रिमेम्बर ऑल द डिटेल्स क्लियरली, बट जस्ट टू लेट यू नो एंड टू मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग, आई थिंक रशिया में कहीं एक प्रॉब्लम थी फॉर, जहाँ पे बहुत ठंड थी कि द वायर्स वर गेटिंग फ्रोजन, एंड उसपे इतनी मोटी मोटी बर्फ जम जाती थी। तो जब उन लोगों ने ये टेक्निक शुरू करी कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ यू नो ice blocks on wires, तो people started giving absurd ideas. एक ने कहा आग लगा देते हैं, किसी ने कहा गर्म पानी डाल देंगे, किसी ने कहा एक भालू को लेकर आ जाएंगे, वो भालू उसकी बर्फ को तोड़ देगा। तो ये होते होते, although these ideas were so absurd, the final solution that they came up with, which was the cheapest solution, was that they actually took a helicopter and threw hot water on all the areas so that the ice melted. And this was one of the cheapest solutions, which really worked for them. So ThoughtSpark can give you some very innovative solutions. एक और strategy होती है big rock strategy, which is very famous. अगर आप एक जार लें, उसके अंदर आप पहले से सैंड भर दें, तो बड़े पत्थर डालना मुश्किल होता है। तो what you do is you put big rocks first, उसके बाद आप छोटे छोटे रॉक्स डालिए, उसके बाद आप डालें सैंड, तो भी उसमें सैंड डलने की गुंजाइश होती है। तो दिस इज एन आइडिया दैट यू यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर कंपनी। You identify your big rocks, which are your highest priority projects. Then you find urgent and important priority projects, and you fill your time with that. And last, if
the sand is your unimportant things which you are doing as favors, या which you are doing as दोस्ताने में या जैसे भी. So you have to prioritize your tasks according to the big rock strategy. This is something that really works for us at Let's Read. So opportunities to network with industry peers. Uh, I think one of the things that always works for me is making connections and building a relationship with people. I think that is an all-time strategy which works for everybody. Being honest and having true relationships where you can support each other and you can support your friends and your peers. I always believe in karma. I always believe that when you do good to others, the good comes back to you. When you do bad to others, it comes back to you. Uh, and thus, I feel that if you are honest with the relationships and you are honest with people and you help each other, then definitely things work out for you also. तो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती नहीं आपके पास, आपको कभी कभी उनको क्रिएट भी करना पड़ता है. यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू गो फॉरवर्ड. कभी लोगों के समटाइम्स डोंट ऑलवेज गेट डिसहार्टेंड बाय पीपल एंड से कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया या उन्होंने मेरी तरफ वापस नहीं आए. आई थिंक समटाइम्स पीपल आर बिजी and they also have a lot of things on their mind. So keep going back and connecting with people. Create your own opportunities. I think it is when you are starting a business, it is very important that you don't wait for things to happen, but you create opportunities for yourself. So I think those were in very short time some of the things that we do at Let's Read, and I hope you find them useful. Wow, wow, wonderful. Miss Asma, within such short period of time, you have elaborated on so many solutions. That was really the best part of your presentation, that we as a business owner have really enriched our knowledge about how we can leverage our business platforms. Miss Asma, here, as you can see, that there are students who are very, very keen in reading programs. So what I request you is,